अगर हम लोग बोलेंगे तो तुम एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सीनरी बना के दिखाओ, तो उन लोगों उनमें टेंशन में आ जाता है, क्या बनाऊंगा क्या बनाऊंगा। इसलिए मैंने अभी स्टार्ट कर रहा हूँ कैसे सीनरी सोचेंगे। तो 4 सीनरी हम अभी यहाँ दिखाएंगे। सीनरी बनाने का जो स्ट्रक्चर, ये 1 2 3 4। तो पहले मैं 1 नंबर में स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने पिछले ड्राइंग में दिखाया था एक सीनरी, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, वैनिशिंग पॉइंट, आई लेवल। तो यहाँ भी हम लोग ऐसे ही सोचेंगे, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के थोड़ा सा ऊपर सोचेंगे ये आई लेवल है, ये वैनिशिंग पॉइंट। तो पिछले सीनरी में जो देखा है वो एक तरीका है सीनरी बनाने का। कुछ ड्राइंग ऐसा होता है, सीनरी ऐसा होता है कि इधर बड़ा ऊंचा बड़ा होता है और इधर छोटा होते जाता है। तो ऐसा भी सीनरी होता है। ये पार्ट हो जाएगा आसमान का, या कि स्काई, दिस पार्ट इज फॉर स्काई and this part hills, jungle, etc etc, and this part for landscape, the sky, hill, land, water, hills, this is land and this is वाटर। कैसे बनाएंगे? स्काई को अलग से कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, और इसमें तो सन, स्टार कुछ भी बना सकते हो। नाइट का सीन है तो स्टार, मून, एक्सेट्रा, और दिन में सन और सनसेट, सनराइज कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग पहाड़ बनाएंगे, हिल बनाएंगे। तो हिल बनाने के लिए इसको मान लेता हूँ हमारा रेफरेंस लाइन, जो हम लोग मदद करेगा सीनरी को बनाने के लिए। ठीक है, ये ओरिजिनल सीनरी का लाइन नहीं है, हमारा रेफरेंस के लिए मैंने ऐसा ऐसा सोच लिया कि ऐसे हम सीनरी को सजाएंगे। तो अगर ये हिल होगा, this is hills और mountains। ऐसे बनाया मैंने पर्वत का। This is hills and mountains, giving details. We am trying to make it more prominent so that the students can understand very easily the subject of this drawing. These are the hill and mountains. Okay, and this is sun. We may draw this sunset scenery. This is land part or landscape. We can make it more prominent and beautiful by making this landscape like this. This is for the depth of this land and water part. This detailing, this black part is means very deep, and this land part is
higher than the water. This land part is higher than this water part, water level. To show this water level high and deep, we will use these lines, these straight lines. This shows the depth of water, and this is the detailing of water. This is the detailing of water. These horizontal lines are detailing of water. Okay, we can draw a beautiful scenery sketch. We can apply pastel color or watercolor, acrylic color while painting everything. Before drawing, before making colorful painting, we must have to draw a beautiful sketch. Who can draw a beautiful sketch, he can paint the scenery beautifully. Okay, and now we will do more details to make more beautiful this painting. Yes, I am drawing a pine tree here. This is pine tree. Okay, and I will draw here another pine tree to make it more beautiful to see. Then what will be the height of another pine tree? This height is this, and here is another pine tree. According to our eye level, this height, this is the height of this pine tree, and this pine tree is faster than this, so it must be less height of the previous tree. So this will be the another pine tree. If this is the sun, we have to draw shadow of this pine tree. How we will draw the shadow? This is the sun, so direction of the shadow must be here. This is the direction of shadow, and this will be the direction of the shadow of this pine tree. Without shadow or light and shade, painting will not be prominent and real. Before making realistic painting, we must have the sense of light and shade and shadow. This is shadow. And this part will be light. This part will be dark. This the lower part of this hill must be dark, and upper part will be light. A student must remember the light is very much important than shadow. One who can leave the light, his painting will be more gorgeous. This is water. If we will draw here another pine tree, that pine tree will be more taller, like this. In this way we will finish all the drawings. Now students can draw a beautiful scenery like this. Now we will start the second part, another scenery.